many years, this is the first time you got a chance to ask. So ask. I have interviewed you once at my Mehboob studio. So, I mean, my first question... My problem at that point in time was that I knew names, but I didn't know faces with those names. अभी तक वो problem चलता है. तो अभी बीच में ही ऐसा हुआ है कि मैं एक फेस को जानता था, लेकिन उसका नाम नहीं जानता था. और वो मेरे बारे में हर आर्टिकल में बुराई चल रहा था. और फिर वो एक किसी पिक्चर के लिए करीबन 1.5 साल पहले वो एक इंटरव्यू के लिए आई, और फिर किसी ने उनका नाम पीछे से बुलाया तो वो घूमी. तो ऐसे अच्छा आप हो. तो ऐसे ही ये हुआ था. उस वक्त नाम और फेस का दोनों का मिलाप नहीं था. अब है अच्छी तरीके से, क्योंकि जब इतना बुरा लिखा गया मेरे बारे में तो मुझे वो फेस और नाम को एक जोड़ के रखना पड़ा. आइए पूछिए अब क्या पूछना चाहते. So before I open it to the press, I would like to know what was your first ever Filmfare performance? How did you feel? I will tell you my first ever Filmfare performance. I will not take the name of the editor at that point in time, but it was just after Maine Pyar Kiya. You can figure it out who it was. Okay. So I was told I should come for the Filmfare Award, and that the award was going to be given to me. So I went there with my father. My father wore his suit. Whole family went there. Beautiful. And then the nominations were announced. Best actor goes to Salman Khan. I stood up. Then another name was taken. And then another name was taken, and the award went to Jackie Shroff. So then, because I was told this, okay, I was going to get it. So my dad said, "Ye kya hai?" Anyway, I was to perform that night for the first time. So I went backstage and I said, "This is something I cannot do because this is not done. I don't care. I don't care at all. I mean, Jackie's got it. He was damn good in Parinda, but you shouldn't have done this with me. And since you're my father's friend, you shouldn't have ever done this, you know." So he said, "No, but you have to perform." I said, "I cannot perform." So then suddenly he said, "You know what? I'll pay you for this performance." So I said, "How much?" So he gave me a figure. So I said, "It won't happen in this much. Little more. I took a substantial figure at that point of time, and that was the first time, 5 times that, 5 times them. And then he said, "Please don't tell anyone." I said, "This is the wrong person you're talking to." So there was, I think, Juhi and Aki there. I came out, I think Centaur Hotel में था वो. Pool के ऊपर उन लोग वो ramp और stage बनाते थे. तो I said, "बाहर निकलो भाई Aki." Juhi, ऐसे ये check मेरे पास आया इस performance का. जरा बात कर लो, अपना भी निकाल लेना. कितना है ऐसे ये फिगर नहीं बताऊंगा, तो negotiate कर ले. So that was the first time that any award function has paid for a performance. हमेशा से वो award के लालच के अंदर perform कराते थे, और वो हमने ये change कर दिया Filmfare और हमने और इनके उस वक्त के editor ने. So आज जो हम लोग award functions के लिए परफॉर्मेंसेस के लिए होस्टिंग के लिए पैसे कमाते हैं, ये बदौलत है इनके उस वक्त के एडिटर की. So sorry, तालियां उनके लिए. Sorry to interrupt, but Salman was sharing this same story with me a couple of weeks ago, and he was telling me, because I'd met Akshay a few years ago, and then he started talking about this, but the credit for making the industry open one more avenue for revenue, all the credit goes to Mr. Salman Khan. No, it goes to your editor at that point in time. I just saw an opportunity, I took it. And after that, everyone started paying. And now I'm going to start award dena paise do. Salman, I have a question for you. You've been a part of the industry for so many decades now. The last couple of years, obviously, it's been tough for all of us in India, but, in tough times, you saw an excessive amount of negativity, trolling, and I think,
the Indian film industry has always been a little bit of a soft target. It's great to see that we bounced back with a bang. But in the meantime, you've also had platforms like OTT, etc., become mainstay of Indian public. What are your views on how the two will coexist? Because you obviously live it every day. Will one impact the other, or? I really don't know. I mean, when there was just the film industry, TV was not there. When TV came in, a lot of people from the film industry started getting a lot of work on television. And then the people who did not get work on television, now they started getting work on OTT. So there's a lot of work for actors. But OTT has suddenly started becoming cooler than television, which I don't think so. I mean, this is one lot of people. एक पहले जो parallel cinema हुआ करता था, वो अब OTT हो गया है. अब OTT का पहले चक्कर, I think the first one to start this off was, I think, Ram Gopal Verma, one of the first few to do that kind of stuff on OTT, and then after that people started watching, and I just think that I don't believe in that kind of content. I mean, I've been here since 1989 and I have never done any of this kind of stuff, so I just think that there should be a censor on OTT, and all this, vulgarity, nudity, gali galoch should, stop, because अब सबके पास ये सब फ़ोन पर आ गया है. चलो 15 साल का 16 साल का बच्चा देख ले, आपको अच्छा लगेगा कि आपकी छोटी सी बेटी देखे पढ़ने के बहाने में? तो आई जस्ट थिंक दैट जो कंटेंट शुड बी चेक्ड ऑन OTT, एंड जितना क्लीन होगा कंटेंट उतना बेहतर होगा, एंड आई थिंक व्यूअरशिप उसकी ज़्यादा होगी. आप ये देख लोगे, आपने परफॉर्म कर लिया, आपने लव मेकिंग सीन्स कर लिए, आपने किसिंग कर लिया, एक्सपोज कर लिया, और आप अपने बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं और आपका लिफ्टमैन, आपका वॉचमैन आपका कंटेंट देख रहा है. सो आई जस्ट डोंट थिंक दैट वो अच्छा है. आई मीन फॉर सिक्योरिटी रीजंस, वी डोंट नीड टू डू दैट. हिंदुस्तान में रहते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, बट इतना ज़्यादा बीच में हो गया था. अब जाके थोड़ा कंट्रोल में आया है. Now people start doing a lot of good content and decent content. क्या होता है कि कुछ लोग कर लेते हैं, जो लोग बहुत ही talented हैं उनको, और जो नहीं करना चाहते हैं they get left out. So इसके ऊपर censorship तो होना ही होना चाहिए. जो हमारी पिक्चरों के ऊपर है, जब थोड़ा सा ब्लड आ जाए, ज़्यादा हो जाए, एक्शन ज़्यादा हो जाए, वो A सर्टिफिकेट दे देते हैं, UA दे देते हैं. तो वाई नॉट हियर? टेलीविजन पर भी है. मैं बिग बॉस होस्ट करता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि अंदर इतनी गाली गलोच होती है, इतनी मारपीट होती है, जो कि हम दिखा नहीं सकते. तो वो टीवी का जो सेंसर है, व्हाट इज कॉल्ड, हाँ क्या बोलते हैं वो टीवी के सेंसर को, कुछ है उनका एक तो वो है जो भी है, तो उनके नॉर्म्स के हिसाब से हम वो आपको वो दिखाते हैं. क्या नहीं, कुछ और ही है. हाँ ऐसा या अरे देखा, ये होता असली जर्नलिस्ट जो था. व्हाट आर यू डूइंग apart from sending me text messages that you're excited to see me? Salman, one more question, and you mentioned this last when we met. Like even in the South industry, I think per number of people, they have more theaters than I think the Hindi film industry does. I think the biggest reason for China being such a big market, even for American films, is the massively large number of theaters that they have. What's your view on what we can do here? Because somehow private guys don't want to sort of look at investing that. Should it be something that sort of the government should look at as an infrastructure thing? So we earlier used to have a lot more theaters than we do now. There are 1,600, 1,800, 500, 400, 2,000 theaters shut in every state. I just think that they should open up. There's more revenue for everyone. It's more taxes for the government. They should just open up. More films can come in. Screens can come in. But let's see when that happens,
Salman, one last question. I think, whilst Maharashtra is Bombay is the home of the Indian Hindi film industry, we see a lot of the talent and the producers actually doing a lot of location shoots either in other parts of the country or obviously in other countries. And perhaps a big reason for that is the sort of tax-friendly or business-friendly incentives that governments like the government of Abu Dhabi, London, etc. offer. And one of the things that we've been discussing with the Maharashtra government is, we have the sea, we have cities, we have forests, we have hills, everything. So what will it take for, We have the industry based here. Yeah. Now UP is opening up, Haryana's opened up, Madhya Pradesh has opened up. They're all giving you a rebate, and the film productions have gone so high that this rebate for smaller film does make a huge difference. You get a rebate from these places depending on your production budget of 2, 3, 5 crores. So that's a lot of money in a small film. And I think that will eventually open up in Maharashtra as well. Everyone is shooting everywhere else. But since Maharashtra, we all shoot in Maharashtra. Film City हो या नायगांव हो या उमेरगांव हो या करजत हो या जहाँ पर भी हम शूट करते हैं, तो अभी तक इनके ध्यान में आया नहीं. बट बहुत सारे लोग यहाँ से अब बाहर रिबेट लेने के लिए शूट करने जा रहे हैं. Salman, just moving back to entertainment, what are your thoughts about who's the sort of youngster, male or female, that I think you think will be the Lambi Race Ka Ghoda? Anybody that sort of you think is exceptional? नाम लो, कौन कौन है? All these guys are really good, really talented. Very talented. All of them are really hard working. They're all very focused. But the 5 of us are not going to give it up so easy. 5 में कौन है? शाहरुख, आमिर, मी, Aki, Ajay. We'll make them run for their money. We'll tire them out. हम लोग की पिक्चरें चलती है, हम प्राइस बढ़ाते हैं, और वो उसके चक्कर में जब हमें नहीं मिलता तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं. क्यों भाई? And I've been hearing this for a long time कि हमारी जो हिंदी पिक्चर है वो चल नहीं रही. खराब पिक्चर बनाओगे तो कैसे चलेगी यार? सिंपल है. पिक्चर वो बनाओ. अब हर एक के दिमाग में ये होता है कि हम मुगल आजम बना रहे हैं, शोले बना रहे हैं, हम आपके हैं कौन बना रहे हैं, दिलवाले बना रहे हैं, बट वो इवेंचुअली बनती नहीं है. क्योंकि आजकल के कुछ डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन लूँगा नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान को कोलाबा से लेके अंधेरी तक के समझते हैं, जो कि वो हिंदुस्तान नहीं है. हिंदुस्तान है वो रेलवे स्टेशन के उस तरफ से स्टार्ट होता है, ईस्ट से स्टार्ट होता है. तो आजकल के एक बड़े ही कूल डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के एक इस टाइप की पिक्चर बनाएंगे, वो पिक्चर चलती नहीं है. हमको देखना है हिंदुस्तानी कंटेंट. और ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म किसी का भाग किसी का तो ये मुझ पे भारी नहीं पड़ना चाहिए. इनफैक्ट सलमान आपको बड़ा बोल रहा था कि ये कौन सी पिक्चर है बना और ये देखो इन्होंने क्या खुद बनाया है. सलमान, आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही पोलाइटली और फॉर्मली बता रहे हैं, बिकॉज मुझे उन्होंने अपने यूनिक अंदाज में यही स्टोरी सुनाई थी. तो 21 तारीख को रिलीज हो रही है किसी का भाई किसी की जान. ये मटेरियल रख लेना भाई, शायद काम आए. फिल्म फेयर के फंक्शन में बड़ा बोल रहा था कि कंटेंट अच्छा नहीं है, आपने क्या बनाया है. ट्रूथ इज हमने बहुत मेहनत की है इस पिक्चर के ऊपर और हर एक कोई करता है. लेकिन अब जैसे कि ये कुछ पिक्चरें चली हैं अब जाके वापस से, क्योंकि वो हमारी हिंदुस्तानी फिल्में हैं
जो पिक्चर चली है वो हमारा कंटेंट है, वो 30-40 लोग फैमिली के देखने जाते हैं वो फिल्में। एक ऐसी फिल्म जो कि इतना पैसा खर्च करो और फिर उसके अंदर एक इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, तो वो नहीं चलती। और आजकल टिकट प्राइसेस भी इतनी महंगी हो गई हैं कि यू वांट टू गो एंड सी लाइक अ बिग लार्ज फेस्टिव फिल्म जिसमें इमोशन हो, ड्रामा हो, गाने अच्छे हो। बाय द वे किसी की जान के गाने सुने आपने? है ना? अब ट्रेलर भी आएगा। हाँ, उसके बाद 21 तारीख को फिल्म भी आएगी। तो बेसिकली अब कब है फिल्म फेयर? 27 को। तो 21 को किसी का भाई किसी की जान रिलीज है। 24 को मैं कुछ और कर रहा हूँ। 27 को ये है फिल्म फेयर। तो आप सब वहीं पर मिलोगे मुझे। और जिस अंदाज से अभी ये होस्ट किया है वैसे ही फिल्म फेयर भी होस्ट होगा। आई होप यू गाइस एंजॉय इट। बस और कुछ किसी को पूछना है? आई एम ओपनिंग द फ्लोर। मुझे भी ये फीलिंग आ रही है अंदरूनी। वो तो कमाल था, हमारे पूरे टीम ने हमको रोका गया कि नहीं लगता दिल। ये गाना डालना नहीं, 80s का गाना है, आउटडेटेड गाना है। वही गाना सबसे बड़ा हिट हो गया। लव इट। Well, that was a very fascinating conversation. Thank you so much, Mr. Pillai.